direct short-term responses to the crisis and will revert to regular levels once COVID-19 passes. However, some of these shifts will continue, creating a long-term digital disruption that will form businesses in the future. So, in order to understand the opportunities and how to remain, you know, how to remain basically competitive in the face of this overwhelming tidal wave of bad news about the coronavirus, and what we need most right now is the daily reminder of our better human selves so that each of us can rise to this challenge. So, in order to inspire everybody at this point in time, PhD Chamber of Commerce and Industry has curated this very, very important webinar so that we are able to get some sort of psychological immunity, although we are all working for our physiological immunity. But psychological immunity boost is very important, and this webinar will basically give the injection of this psychological immunity. So, without any further ado, I'll invite Mr. Sanjay Aggarwal, the Senior Vice President of PhD Chamber, to give his remarks. And please start this session. Over to Mr. Sanjay Aggarwal. Thank you, Dr. Jatinder Singh. Dr. Rajesh Aggarwal, business thinker and founder of the Rebirth Academy. My colleague, Mr. Pradeep Multani, Vice President of the PhD Chamber. Mr. Ashish Aggarwal, Chairman, Startup Forum of PhD. And Mr. Bharat Singh Ji Mehta, Co-Chair, Startup Forum, PhD CCI. Mr. Sumit Dugal, Startup Forum. Startup members, founders, distinguished guests, a very warm welcome to you all. It is really a matter of pleasure to me to be here among this August virtual gathering for the webinar on COVID crisis. And that COVID crisis which we should not let go waste, being organized by our chamber. The topic itself is so very apt. Prime Minister Winston Churchill of UK had said this way back after the Second World War that let's not let a good crisis go waste. And it was a very, very apt remark. And I would say a very sage advice, not just a remark, for the whole world. And I think our country grabbed it with both hands and really did an excellent job out of the 1991 crisis. And let us remember, it was a crisis in many manners, including the manner in which that the government itself was very weak in addition to the economy being weak. But what all we were able to do as a consequence of the 1991 crisis has had such lasting effects that within I would say, 10, 12 years of that crisis, India was being recognized as a force to reckon with, and we were just on everybody's mind and mind and on the horizon that everybody wanted to come to India, and it became the flavor of the season just 10, 12 years within that. So I think again we did rather well in the 2008-9 crisis, in which, of course, we can't say that we came out winners, but then we didn't come out to be losers at least, and we did reasonably well out of that global crisis also. This new COVID-19 crisis, which has engulfed the world, is a game changer for not only us but for the whole world, and therein lies the importance of the whole systems, the whole logic, the whole normality that we considered, things that we considered are going to happen in a particular fashion. It's called for a toss. The basic assumptions that with which one worked for the economy or for the world have been upended, and now the new popular term is the new normal. So we are now looking at a new normal. The new normal which is going to prevail during these corona times
and even post-corona times. Mm. Mm. And this new normal is what I would think, whatever be the amount of crisis and difficulties that we along with the whole world is facing, should be giving us a huge lot of new opportunities and new ways in which we can you know change the way our country is looked at and the way our economy works to a much higher pedestal. So I guess this is where the startups are going to have a very important role. Right. Reason being that the startups are the very types of businesses and entrepreneurs who actually create a new normal. We have seen the new normal being created by startups like Uber, by Zomato, by Oyo, or by those what's that hotel app across the world, accommodation app across the world. I'm pretty bad at, but I know that these things are, so these are the things which have actually changed and brought about a new normal in the way we use a taxi, in the way we find a hotel room, and in the way that we can look for an apartment to rent. So that is, but that is going to be a very small part of the change now. The huge changes that are going to happen. This new normal is, for example, hit the very people who brought in a new normal like Uber or the hotel app, or that app which is the one in which you hunt for apartments across the world, residential apartments, right? So what I'm saying is, at this point of time, startups have got a huge role to play, and that is all that we are going to try and understand. We are not a small country. We are not a small presence on the startup ecosystem. From the paper given to me by the Secretariat, I find that there are nearly 80,000 startups registered on the Startup India portal. We are the third largest startup ecosystem in the world. I guess instead of me trying to be an expert in a field which I am not, I would rather listen to the expert and then listen to the discussions and comments that happen. But I would just like to stress, the world is coming to a new normal. It should be a big advantage considering our strength in both innovations and in the software field, where again the lots of systems would need to be re-engineered. And one more big opportunity that I see, which is not related to an individual businessman, is how our government and the state governments take this opportunity to really break away from the chains of old systems, old regulations, which everybody says a holy cow. You can't do that. You can't take away that rule. You can't meddle with that rule. UP government and I think MP government have come out and they have thrown away those labor laws, which was the bane of our industry, and one of the major reasons why every foreign company was afraid to invest in India. So now, taking advantage of this crisis, I think it's a great opportunity for the government also, for the legislatures, for the politicians to come up and kick out all those systems which have shackled us. They are shackling us. They were shackling us simply because they are there. Simply because they are there. Whether there's any logic behind it or not? No, it was there. So I guess UP has taken the lead. Others we will try and convince. But let me tell you, we can't keep calling it crisis for too long. So we as a business community, wherever we see these cobwebs of old, these shackles of old, we have to be very vocal and try and dig into the government's ears that look, break out of this. We have to get out of the crisis. So I guess we all have to work on every different aspect, including how to re-engineer our individual businesses, how to invent new businesses altogether, and how to impress upon the government to do away with, I would say, thousands of stupid rules and acts which have survived
just because they are there. So I'd be very happy for to now go ahead and listen to the discussions that happen. Dr. Jatendra Singh, I request you to please Okay, right. Thank you, move the sir. Thank program you for forward. your Thank you. ice-breaking remarks. In fact, you gave a vivid description of startups and how they are also, boosting our economy in these challenging times. Now, I request Mr. Ashish Agarwal to introduce the speaker, and so that we are able to actually start listening from the horse's mouth. Over to Mr. Ashish Agarwal. Thank you, Mr. Jitendra, respected Sanjay Agrawal ji, Multani ji, Rajesh Agrawal ji, and Mehta ji, and the all the PhD members. Good afternoon to all. First of all, I would like to welcome all of you on behalf of PhD Chamber of Commerce and the Startup Forum. Friends, as you know, PhD is a very old chamber, more than 100 years old, and majorly catering to the MSME. And now we have set up the startup forum in the chamber where we are helping the startups in all manner, whether they need funding, whether they need policy advocacy, whether they need any kind of mentor support. We are planning to set up incubation center also. So a startup forum is a very vibrant forum of the chamber, and we are making the members also in the forum. So the startups are welcome to become the member of the forum, so they can contribute in the overall startup forum. So friends, no doubt the time is very tough and everybody is facing a lot of challenges. So the startups also or entrepreneurs also. You see that entrepreneurs are always alone at the top when they are Yes. top of the person in the organization. So the employees, the other stakeholder can speak to each other, but where the entrepreneurs should go. So we thought, let us discuss or let us some webinar where we can discuss how this time can be used or this will not be wasted. So keeping in mind, we have requested to Rajesh Agrawal ji. Rajesh ji is a very well known person. I think there is no need of introduction. Everybody is known to him, and he is the person. I think he started his journey 30 years back with a very humble beginning. If you know, then you will be surprised that he started his journey with the courier boy, and then he has reached to the sales manager, and then he has worked in the many organization, and he has set up this company, the River Academy, at his own. So he is a self-made man. He is a first generation entrepreneur. He himself is an entrepreneur. So friends, in spite of it, he has a very vast experience. He has very large gathering in many programs where he has addressed the audience. Friends, he is an inspirational speaker, motivational coach, and I'm fond of him actually. I've listened a lot of his CD, lot of his YouTube videos, and I've forwarded to many people also, and people appreciate it a lot. So we thought today nobody can be better than the Rajesh Agrawal ji. So Rajesh ji is having lot of clients who are from the large corporates, including DLF or the CA Institute. Then he has other clients also, Blue Dart and all. So Rajesh ji is a personality where he has transformed many people in many areas, or whatever he has done, it is remarkable for everybody. So I have requested him, and you will be surprised that on my request for the chamber, he has immediately said that if it is a chamber request, then I will definitely be interested to come in this webinar, and I would love to speak on this topic because he's always motivating to everybody actually. How the energy is coming, nobody knows actually, but he's having very great energy. So I will not take much of the time. I will request Rajesh ji to please address the startups because we have lot of startups and lot of entrepreneurs in this webinar. So they are looking towards you that how the COVID time can be utilized, not be wasted, and people would be following you also. So thank you, Rajesh ji. Over to you. First of all, I must express my gratitude to Sanjay ji, Multani ji, Mehta Saab, Jitendra ji, and my brother and friend Ashish ji. Thank you, Ashish ji, for lovely words. And I also express my gratitude to PhD Chamber of Commerce that they thought that I'm
I have something to share. At the outset, I must say that I'm not here to give any lecture. Consider me as your friend. Consider me as your brother. It's just a discussion between two friends and two brothers. I still remember my class 6 English teacher. He was English teacher, but he gave me a wonderful life-changing quotation when I was in class 6. He said two things. He said, everything should be done in a friendly and homely atmosphere, and formalities should be avoided. So I considered that people sitting there on the other side of the table, they are much more experienced than me. They have traveled a long journey. So it's just a discussion between दो दोस्तों के बीच ये चर्चा है. और मैंने कहीं सुना, चूंकि मुझे कहा गया है let it be Hindi and English both together कुछ है. So I heard, मैंने सुना कि जब दो मिठाई वाले मिठाइयों से लड़ाइयाँ करते हैं, बांटने का काम करते हैं, तीसरे को लाभ ही होता है. So it's a beautiful exchange of good sweets, good ideas, good knowledge. And my good friend Ashish ji said that I'm having a large experience of 30 years. But आप हैरान हो जाएंगे, since last 50 days I'm thinking I'm reborn. I have taken a rebirth. It's a new birth. Because last 30 years experiences and last 40 days, 50 days experience, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है. Things have changed, mindset have changed, process of doing business has changed, process of interaction has changed. So I wonder my last 30 years experience, how good those experiences would be applicable in the present context. तो जो आज की चर्चा है उसमें based on my last 30 years experience उससे थोड़ा सा हिस्सा मैंने लिया है. But most of the part has I have taken from last 50 days of interaction experience, what's going in the market, what's happening, and a little more I have taken from my inside, my inner world, जो मैं realize करता हूँ, जो मैं feel करता हूँ. Very little I have taken from Google or any other data, क्योंकि वो तो market में available ही है, उससे सब जानते हैं. I hope this journey is going to be a wonderful journey. For a few minutes, I will share my idea, then we will have a small question answer round, and then we'll see where we move. The topic which is given to me, crisis should not be wasted. बड़ा सुंदर topic है, crisis should not be wasted. Now, I was wondering, मैं सोच रहा था इस पे काफी, I was wondering, crisis should not be wasted for what? किस चीज के लिए crisis should not be wasted? Is it for new possibilities? Is it for new opportunities? Is it for new business model? किस चीज के लिए crisis should not be wasted? तो एक तो है crisis should not be wasted for the current scenario जो भी चल रही है. The other part which came from my inside when the topic was given to me, crisis should not be wasted for three things. And the first thing is thank you. Thank you to God that we are safe. Thank you to God that we are interacting. Thank you to God that we are taking breath. Thank you to God that our family is safe. So I think crisis should not be wasted to begin with by giving thanks to Almighty, to God. And crisis should not be wasted. Second part is counting our blessings. Every day good things are happening. How many people have connected together via PhD Chamber of Commerce? So we are counting our blessing. मैं देखता हूँ कुछ interaction जब मैं लोगों से करता हूँ, तो I just first few 5 sentences are very interesting to know the other person कि पहले 5 sentence क्या आ रहे हैं. तो अगर बहुत ज़्यादा hopelessness और बहुत ज़्यादा disappointment में बातें हो रही हैं, which means the person is going through a negative mindset. But if the person is still full of energy, full of hope, which means we are counting our blessings. So this is second part, crisis should not be wasted because we are counting our blessings. The most important part, crisis should not be wasted in this whole scenario, apart from business skill and business strategy, is this is the time to build contacts. This is the time to build relationship. This is the time to join together because आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली. So while I was exploring on this topic, crisis should not be wasted. Coming to the business point of view, coming for entrepreneurship, coming for startup, I was thinking amidst all challenges, यहाँ पे बहुत से मजदूर अपने घर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत से इंडस्ट्रीज को रुकना पड़ा, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, ये भी एक चैलेंज है. And let us accept it, this is a challenge. I was talking to one of my port trainer who is in the same field. तो मैंने कहा आपकी क्या राय है इसमें बहन? He said, no, there is no challenge, nothing. We should remain absolutely positive. वो बड़े high tone में और shouting वाली tone में he was consulting me, he was guiding me. I said, but this is not the time to this kind of motivation. This is a time of soft kind of motivation. क्योंकि हम जिसको motivate दे रहे हैं, we do not understand what kind of situation he or she is going through. So he has his own way of giving motivation. But I discovered in myself in last 50 days sitting at home and giving seminar almost every day, twice
after this presentation, I have a seminar in the evening also, that this is a time to give a soft touch, a healing touch, a personal touch, and a touch is that I am there with you as a friend. So when I was exploring last 45 days की business में क्या changes हुए, कुछ down हुए, कुछ बंद हो गए, कुछ आगे बढ़े, कुछ stop हो गए, कुछ कम हो गए, कुछ बढ़ गए. But I found something very interesting that there are businesses based primarily e-commerce businesses जहाँ पे mergers हुए, जैसे Apple और Google ने, Apple iPhone और Google ने merge किया है, Apple और iPhone ने merge किया है, ऐसे मैंने सुना. कुछ takeover हुए, कुछ फंडिंग वही बहुत मिली है, बहुत सी ई-कॉमर्स पोर्टल है जिनको बहुत फंडिंग आई हुई है. मैंने ये भी देखा कुछ लोगों ने अपनी वैल्यू एडेड सर्विस किए हैं. फॉर एग्जांपल जो लोग स्विगी का आप एग्जांपल ले लें, जो लोग केवल फूड डिलीवर करते थे वो ग्रोसरी भी डिलीवर कर रहे हैं. इसका मीन्स क्रिएटिविटी का बड़ा सुंदर इस्तेमाल उन्होंने किया है. I was going through a seminar by Edward de Bono long time before, and he was considered to be the father of creativity. And he said creativity means when you are joining two things together which has no relation. It's a beautiful thing. Creativity means जब आप दो चीजों को एक साथ ज्वाइन करते हैं जिसमें कोई संबंध ना हो, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं. सो स्विगी ने, मैंने सुना कि उन्होंने ग्रोसरी डिलीवर करनी भी शुरू की है. एंड आई फाउंड दैट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ वेलनेस में काफी प्रोग्रेस हुई है. And also in the field of hygiene and safety products में काफी ज़्यादा prospect बने हैं. So amidst all crisis last 50 days, we found that good things are also happening. Merger is taking place, taking over is taking place, funding is coming up, two companies are joining together. So what I did, मैं थोड़ा सा शुरुआत इससे करूँगा कि मैंने क्या किया पिछले 50 दिनों में. Because you know somebody said that whenever we share something, it's a good idea to start from personal example. उसमें आपकी clarity रहती है, उसमें आपकी अथॉरिटी रहती है. सो 23rd मार्च से लेके मैं अब तक घर पे हूँ एंड आई एम गिविंग एवरी डे आई एम गिविंग सेमिनार फ्रॉम होम. माय लास्ट सेमिनार, पब्लिक सेमिनार, वाज इन कोलकाता ऑन 20th मार्च. आई केम हियर ऑन 21st मार्च एंड 24th मार्च से सब कुछ बंद हो चुका है. And immediately I told my mind that I am one of the busiest person now online. I told my mind. And this has happened, you know why, how? When I started my training career in the year 2000, I must tell you, I actually started my training career in 1993 under some training company, and as a trainee. Then I became training manager, then I became training director, and then in 2000 I resigned. I said no more as an employee. Now I used to become an entrepreneur, जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया. So 29 September 2000, I launched my own company called Rebirth Academy, which is a proprietorship company. क्योंकि मुझे partnership और private limited की जरूरत नहीं पड़ी. I operate from home. So when I started my company, I was in a huge financial loss because in the previous company where I was working as a trainer, it was going under certain laws, so I had to borrow money for that company on my security. मेरी security पे मुझे पैसे loan लेने पड़े थे, and for some reason or the other, we had a little dispute और वो पैसे मेरे ही पल्ले आए. मुझे ये कहा गया कि आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा, which was not my money, but since I was a part actively I was participating in that company, so I was liable to pay that money. So I started with minus. I won't declare the amount, but I started from -0. But the first thing I did when I launched my own company in 29 September 2000, I bought a 1-year calendar. मैंने 2000 में कंपनी शुरू की और 2001 का मैंने कैलेंडर खरीदा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का. और उसमें मैंने हर महीने 5-6 डेट्स फेक बुक कर ली. On this date I am booked, on this date I am booked, in February I am booked, in March I am booked, in April I am booked. तो ऐसे करते हुए दिसंबर तक मैंने फेक डेट बुक्स की. I was not booked, but I booked myself. Why I did so? Because while interacting with many, international and national trainer, I came to know that your mind only remains motivated when it sees the future. जब आप भविष्य की कोई चीज बुक कर देते हैं, जब आप फ्यूचर की कोई चीज बुक कर देते हैं, तो माइंड नेचुरली मोटिवेटेड होता है. उसको बाहर से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो आई बुक टिल दिसंबर, और आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों दैट मैंने अगर एक महीने में 4 डेट बुक की, मतलब 48 डेट 12 महीने में बुक की. आउट ऑफ 48 बुकिंग 30 were got confirmed. Actually it was a fake booking, but God has given me so many opportunities that 30 got confirmed and I got seminar. And thereafter I came to know that जब हम कहते हैं खुदा जब देता है कि तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो मैं मजाक में अक्सर कहता हूँ
कि जब तक छप्पड़ बनाओगे नहीं तो वो फाड़ेगा कहाँ से। तो मैंने पहले छप्पड़ बनाया, फिर खुदा ने छप्पड़ फाड़ दिया। एंड दैट हेल्प मी टू बाय एवरीडे कैलेंडर। तो मैंने एक ईगल डायरी आती है जो किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगी। मैंने 2000 से हर साल वो ईगल डायरी 1 साल की खरीदनी शुरू की और हर साल मैं अपने आप को बुक करता रहता। आज 20 साल हो गए मुझे उस ईगल डायरी को यूज करते हुए। और कभी आपसे व्यक्तिगत चर्चा या मुलाकात हुई, आई विल शो यू माय ऑल 20-year कैलेंडर दैट हाउ आई एम बुक्ड since last 20 years. Now, same thing I did on 24th of March 2020, that I booked myself in my mind that I am a very busy man. Every day I'm giving 2-3 seminars. People are calling me. मैंने अपने नंबर, फोन नंबर ओपन कर दिए. I said anybody can call me, anybody can contact me, no mediator. YouTube पे मेरे नंबर अवेलेबल हैं. बट मैंने रिक्वेस्ट उनसे ये कहा, जस्ट गिव मी अ शॉर्ट कॉल, क्योंकि बहुत सी कॉल्स पेंडिंग रहती हैं. तो लोगों ने शॉर्ट कॉल करने शुरू किए, काउंसलिंग लेने शुरू की, एंड मोस्ट ऑफ देम गॉट फ्री. आई डिड नॉट चार्ज एनी मनी. अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम लखनऊ who has taken my workshop and seminar said something. देखिए, कभी कभी बड़ा मजा आता है, हम कहते हैं कि हम लोगों को सिखाते हैं, बट मैं अपने मामले में कहता हूँ मैं लोगों से सीखता हूँ. इसे राजेश जी, डोंट चार्ज एनी मनी, यू जस्ट गिव, डू योर जॉब. आप अपना कर्म करें और ईश्वर आपको अपने आप देता जाएगा. कुछ नहीं देगा तो ब्लेसिंग देगा. आपकी रोजी रोटी में कमी नहीं आएगी. And coincidentally and fortunately things are happening. So last 45 days I am daily speaking to people. I am going Facebook live, I am going YouTube live, and I am doing low budget session, बहुत ही low budget जो कोई भी afford कर सकता है. So this has kept me so much busy कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में maximum seminars मेरे online ही होंगे. So how it has happened? It has happened because I did not allow my mind to settle down. देखिए, मेरी सर्विसेज एसेंशियल सर्विस में नहीं आती. अभी बड़ी इस पर चर्चा चल रही है जी, अगर आप फूड के बिजनेस में हैं, मेडिकल के बिजनेस में हैं, वेलनेस के बिजनेस में हैं, तो आप स्टेबल हैं, बाकी बिजनेस सारे धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे. सो आई डू नॉट कम इन द फील्ड ऑफ एसेंशियल, क्योंकि मोटिवेशन तो सबसे अंतिम चीज है, होनी चाहिए सबसे पहले, बट इट्स अ लास्ट थिंग टू हैपन. पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद मोटिवेशन आती है. So the formula I learned from some of my trainer, they said one formula of the economic is demand and supply. चीजों की डिमांड होती है और आप उसको सप्लाई करते हो. The other formula, which is a wonderful formula, you supply and create a demand. आप सप्लाई करके उसकी डिमांड क्रिएट करें. So in my case, what I did, I supplied good material. I supplied content. मैं content पे रिसर्च करता हूँ, YouTube पे अच्छा content लाने की कोशिश करता हूँ. आज भी जब ये आपका टॉपिक मुझे मिला तो मैंने बहुत होमवर्क किया इस पे. मैंने कहा इतने एक्सपर्ट, इतने एक्सपीरियंस लोग, कितने सारे लोग जोड़ेंगे तो जो भी कंटेंट हमारा हो, हाउ गुड इज राजेश अग्रवाल, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारा कंटेंट कितना ज्यादा अच्छा हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So I connected with people. As a result, so many people are tying up with me. They're saying, sir, we can become your program organizer, we can become your event organizer, how can you become our consultant? So last 45 days I kept myself so busy that now I am thinking that many more opportunities are waiting, times to come. So I remember two beautiful quotation by, when it comes to economy, money, richness, I have my own choices. I follow 2-3 great personalities. From India, I follow नारायण मूर्ति साहब, जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, और भी बहुत से हैं. एंड आई फॉलो मिस्टर वॉरेन बफेट, और इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टर टाटा, रतन टाटा. बट वॉरेन बफेट साहब का 2 कोटेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये आप बाद में सुन सकते हैं. पहला कोटेशन मिस्टर वॉरेन बफेट साहब का ये है, दैट नेवर एवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन. उनका ये कहना है कि नदी की गहराई को 2 पैरों से मत नापना, वरना डूब सकते हो. सो नेवर एवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम. आपकी एक रनिंग इनकम होनी चाहिए और एक पैसिव इनकम होनी चाहिए. अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो आपकी वो इनकम आपको बचा. पहला तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये कोट. दूसरा कोट वॉरेन बफेट साहब का है, दैट रिस्क उस काम को कहते हैं जिस काम को आप कर रहे हैं पर पता नहीं है हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे. आई मीन, वी आर डूइंग समथिंग, but if I ask, are you sure you will reach your destination? And people will respond like this, I'm seeing, I'm trying, maybe, possibilities. तो आप देखिए, अगर खर्चे के मामले में सर्टेनिटी है तो पैसे के मामले में पॉसिबिलिटीज वर्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी. तो मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, अगर वो एक मुझे गोल पे नहीं ले जा रहा है तो फिर मैं हवा में तीर चला रहा हूँ, चलाऊंगा. वो तो फिर बात वही हो गई. एक मित्र ने हमसे मजाक किया
जी टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस, यू विल बिकम करोड़पति बाय चांस। फिर तो बात ये हो गई। तो वॉरेन बफेट साहब का ये कहना है कि रिस्क उस काम को कहते हैं, आप किसी काम को कर रहे हो बट आपको पता नहीं पड़ रहा है कि एक दिन के बाद, एक वीक के बाद, एक महीने के बाद हम कहाँ पहुंच रहे हैं। सो व्हाइल वी आर डूइंग एनीथिंग, चाहे हम कोई नया स्टार्टअप शुरू करें या करंट बिजनेस को रन करें। Now, some of my friends who are in real estate, some of my friends who are in selling car, they say, यार हम तो essential service में नहीं है राजेश, तो हमारा क्या होगा? मैंने कहा देखो, आई एम नॉट अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट कंसल्टेंट, बट एक इंट्यूशन होती है। एक आदमी जो बिजनेस फील्ड में काम करता है 20-30 साल से, उसको एक इंट्यूशन आ जाती है, एक सुगंध, एक खुशबू आ जाती है कि मार्केट किस दिशा में मूव कर रही है। तो एक इंट्यूशन काम करती है, एंड इंट्यूशन इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इट कम्स फ्रॉम इंट्यूशन। एक तो बाहर से ट्यूशन लेते हैं, भीतर से ट्यूशन लेते हैं। सो योर इनर वर्ल्ड गिव्स यू एवरीथिंग। आपका, आप जरा आंखें बंद करेंगे ना, तो आपका इनर वर्ल्ड पूरी पिक्चर आपको दिखा देगी। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल गुरुज को बहुत फॉलो करता हूँ, तो थोड़ा उनकी भी मैं सलाह लेता हूँ अपने बिजनेस कंसल्टेंसी में। सो मैंने अपने मित्र को कहा हु इज इन रियल स्टेट बिजनेस, मैंने कहा देखो यार, देखो, you have two kinds of people in real estate, one is end user, the other in investor। मेरा ऐसा मानना है, तुम अभी लो बजट फ्लैट्स बना रहे हो, बनाओ, और उसमें ईएमआई का प्रोसेस इतना आसान कर दो और फंडिंग का प्रोसेस इतना आसान कर दो कि लोगों को लंबे टर्म में ईएमआई मिले और मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट में उनका अपना मकान हो जाए। कस्टमर हमेशा मिलेंगे। पुणे में एक रियल एस्टेट कंपनी है जिन्होंने अपनी कंपनी का ही नाम रखा है लो बजट फ्लैट्स। आप देखिए ब्रांडिंग कितनी बढ़िया की है उन्होंने, लो बजट फ्लैट। ये ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बिजनेस को क्या नाम दे रहे हैं। नाम सुनते लोगों को लगता है एक बार फोन करें, एक बार बात करें। सिमिलरली वन ऑफ माय फ्रेंड इन सेलिंग कार्स, वो सेकंड हैंड कार्स लेते हैं और वो उनको रीसेल करते हैं। सर ही वाज टेकिंग माय गाइडेंस, राजेश बताओ तुम क्या करें। आई सेड तुम्हारा जितना भी डेटाबेस है उन सबको पर्सनली कॉल करो। यू सी डोंट डिपेंड ऑन व्हाट्सएप, ईमेल, दीज आर टेक्नोलॉजीज फाइन, बट यू नो व्हेन यू गिव अ पर्सनल टेलीफोन कॉल, क्या हाल है, कैसे हैं, सब अपनी बात कर, तो आप बात बात में धीरे धीरे कह सकते हैं कि अभी जो मेरे पास कार की स्कीम है बहुत इजीली रिटर्न वाली स्कीम है, और ऐसा नहीं कि मार्केट में कार नहीं चलने वाली है, लॉकडाउन के बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कार भी चलेंगी। सो यू आउट ऑफ 5 कॉल और 6 कॉल यू विल गेट 1 क्लाइंट जो आपकी लो ईएमआई स्कीम पे कार लेना चाहेगा। सो मिस्टर ब्रायन ट्रेसी एक हमारे ट्रेनिंग गुरु हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी लाइव ट्रेनिंग मैंने बहुत अटेंड की है। उनका ये कहना है whenever you are in doubt go yourself out, whenever you are in doubt go yourself out। जब भी आप डाउट में हो तो खुद जाइए, क्लाइंट से बात कीजिए, सारे बैरियर तोड़ दीजिए। यू सी आपको सेवा भाव में रहना है, हायरार्की वाला फैक्टर खत्म हो गया है। अब वो खत्म हो गया है हायरार्की भाव, आपको डायरेक्टली अपने क्लाइंट से कांटेक्ट करना है। उनको अच्छी फीलिंग आती है। मैं अपने सारे क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता हूँ, और इन दिनों तो मैंने बहुत फोन कॉल किए, क्या हाल है जी, कैसे हैं, नॉट फॉर बिजनेस, जस्ट अ हेलो कॉल। सो एक तो आने वाले वक्त में हम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, इधर हाउ टू एक्सपैंड माय करंट बिजनेस। कल रात मुझे, सॉरी मैं मेरे पास केस स्टडीज आए तो मुझे वो एग्जांपल भी देने पड़ेंगे। Yesterday night one gentleman who is in photography business from Kolkata, he gave me a call and he said, sir, शादियों में गैदरिंग नहीं हो रही हैं, बड़े इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, सो माय फोटोग्राफी बिजनेस इज डाउन, व्हाट शुड आई डू। आई सेड देखो, इमीडिएट आइडिया जो मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप फोटोज क्लिक करके नेचर की या रास्ते की या रोड की बहुत सारी फोटोज क्लिक करके उसकी गैलरी बनाओ, उसके नीचे प्राइस टैग लिखो। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो फोटोज खरीदना चाहेंगी। सो योर ब्रेन इज ऑलवेज रेडी टू गिव एन आइडिया, but the problem with brain, as I learned from various psychologists, the problem with brain is it doesn't understand what is negative, what is positive। जो फीडबैक हम देते हैं अपने ब्रेन को वही वो समझना शुरू कर देता है। अगर हम अपने ब्रेन को कहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला, ब्रेन सेट कंग्रेचुलेशन, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम अपने ब्रेन को कहते हैं बहुत कुछ होने वाला है, ब्रेन सेट कंग्रेचुलेशन, बहुत कुछ होने वाला है। सो इन माय नेक्स्ट स्लॉट अब हम क्या करें, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें क्या करें, जो मेरे स्टार्टअप के मित्र हैं उनमें क्या करें। मैं ये तो नहीं बताऊंगा आप इन फील्ड में स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके लिए ढेरों यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, पर जो मैं बताने जा रहा हूँ करने के दौरान कैसी सोच रखनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करें में जरा ध्यान दें। एक तो लेट अस स्टे अवे फ्रॉम डरावनी वाली न्यूज, सॉरी टू यूज इस हिंदी वर्ड बट मुझे करना पड़ रहा है। लेट अस स्टे अवे फ्रॉम डरावनी वाली न्यूज। जो डरावनी वाली न्यूज है उनसे हम दूर रहें, जो फैक्चुअल न्यूज है उनके हम करीब रहें। ये डरावना बड़ा खौफ पैदा करता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो कोविड-19 में जो डेथ्स हुई, जो मौतें हुई, एक तो जेन्युइनली वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे,
बट मुझे ऐसा लगता है, और आई थिंक डॉक्टर साहब बताएंगे, जो हमारे आयुर्वेदिक के फील्ड में है वो उससे ज्यादा अच्छा जानते हैं, कि एक फियर फैक्टर भी काम किया होगा जिससे इम्यून सिस्टम वीक होता है। मैंने ऐसा सुना है, और अभी हम क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे तो मैं सीखना चाहूंगा कि जब आप फियर फैक्टर में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम हमारा रक्षा कवच है जिससे सारी बीमारियां रुकती हैं या वो अपने पूरे सिस्टम को ठीक रखता है। तो ये इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से भी आप बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो पहली चीज मैं सोचता हूँ इससे पहले कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ठीक करें या हम नए स्टार्टअप को क्या शुरू करें, लेट अस कीप आवर माइंड away from bad news and let us bring extremely hopeful mind. एक आशा से भरा मन नेचुरली पॉजिटिव होता है, उसको बाहर से कोई किक की जरूरत नहीं होती। एक उम्मीद से भरा मन बहुत पॉजिटिव होता है। मैं काफी स्टडी करता हूँ, मेरी अपनी एक लाइब्रेरी है, मैं पढ़ाई आज भी मैं एक आधे घंटे पढ़ ही लेता हूँ, समय निकाल लेता हूँ। तो मैं सुन रहा था एक जगह कहीं यज्ञ हो रहा था, क्योंकि वहां सालों से बारिश नहीं हुई, तो यज्ञ हो रहा था कि भाई यज्ञ करेंगे तो बारिश आ जाएगी। तो एक छोटा 5 साल का बच्चा एक छतरी लेके आके वहां खड़ा हो। तो पंडित जी ने पूछा, साहब आप अब कैसे छतरी लेके खड़े हो गए, अभी तो बारिश आई नहीं। तो बच्चा जवाब देता है, जी अगर आपको यज्ञ पे यकीन है कि बारिश आएगी तो मुझे अपनी छतरी पे यकीन है कि मेरी छतरी को देखकर बारिश आ जाएगी। तो एक्सपर्ट कहते हैं या जानकार कहते हैं, यज्ञ से तो बारिश नहीं आई, बच्चे की छतरी पे भगवान तो ने बारिश कर दी। उस बच्चे के अंदर इतना फेथ था। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उम्मीद और आस्था से भरा मन को आप जल्दी से डगमगा नहीं सकते, वो अंधेरे में भी रास्ता निकाल लेता है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ये कह रहे हैं, राजेश जी सैलरी अभी नहीं दे पाए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे एक मित्र जिनका साड़ियों का बिजनेस है और वो सैलरी नहीं दे पाए क्योंकि दुकान बंद है। तो आई से आप एक काम, जस्ट डू वन, गिव अ कॉल, पर्सनल कॉल टू ईच ऑफ योर एम्प्लॉय, और उनको केवल ये बोलो, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। तुम्हारे घर में राशन की कमी नहीं होने दूंगा, जो मेरे पास है दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो थोड़ा सा दे दो। और आप हैरान होंगे, ये 2 शब्द में एक भी एम्प्लॉय ने उनकी अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी। जैसे कोई बात नहीं, दुकान खुलेगी, हम फिर आएंगे, बस आपका फोन आ गया। उनको पैसे से ज्यादा अपने मालिक के फोन की जरूरत थी। अ स्मॉल फोन कॉल कैन चेंज एवरीथिंग। कभी कभी आउट ऑफ एंगर, ये वक्त मित्रों, ये बड़ा कोविड-19 बड़ा चुनौती वाला वक्त है, बट ये मूड स्विंगिंग वाला भी वक्त है। कल रात मैं व्हाट्सएप के द्वारा हर रोज कुछ ना कुछ मैसेज भेजता हूँ, आशीष भाई को भी मिलता होगा, कोटेशन भेजता हूँ, आप सब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको भी मिलेगा। एंड आई लव टू राइट। सो यस्टरडे नाइट आई रोट एन आर्टिकल, स्मॉल वन, कि हम सब कल्पना करें कि हम एक ऐसे ग्रह में पहुंच गए हैं जहाँ के नियम अलग है, जहाँ के कानून अलग है। जो कानून 40 दिन पहले चलते थे, अब इस ग्रह में वो कानून एप्लीकेबल नहीं है। हमें सेफ्टी रखना पड़ेगा। हमने अपने स्वास्थ्य की, जिस स्वास्थ्य की कभी परवाह नहीं की, अब उसके स्वास्थ्य की परवाह करनी पड़ेगी। हमें, जैसा कि मुल्तानी साहब ने बताया, आयुर्वेदिक चीजें लेनी पड़ेंगी, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, हमें प्रेयर करना पड़ेगा, हमें ये सब हमने शायद पहले उतना सीरियसली नहीं लिया था। तो हम एक ऐसे ग्रह में पहुंच गए हैं जहां पुराने नियम अब एप्लीकेबल नहीं है, नए नियमों के साथ काम करना पड़ेगा। सो नए नियम में तो क्रोध भी नहीं करना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, हाई पिच में बात करना छोड़ना पड़ेगा, इंसल्ट वाली कम्युनिकेशन छोड़नी पड़ेगी, फ्रेंडली वे में अप्रोच करना पड़ेगा। ये सारे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस मेरे विचार से किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले बहुत आवश्यक। सो आई टोल्ड हिम, जस्ट गिव देम अ कॉल एंड टेल देम दैट आई एम विथ यू, हमारे घर में राशन की कमी नहीं होने दूंगा। जब हार्ट से हम कम्युनिकेशन करते हैं ना मित्रों, दिमाग से तो बहुत से लोग करते हैं, बट व्हेन वी कम्युनिकेट फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हियर, ये इसका कोई मजा ही अलग है। अब लोग कहते हैं कि लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, आई डोंट थिंक सो। एक दो लोग अगर ले भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, बट व्हेन वी स्पीक फ्रॉम हार्ट, थिंग्स हैपन। सो व्हाट टू डू, मैं अब मैं आ रहा हूँ। पहला तो है, लेट अस स्टे अवे फ्रॉम बैड न्यूज, लेट अस कीप आवर माइंड एब्सोल्युटली होपफुल। I, frankly speaking, give more marks to hope than positive thinking. पॉजिटिव थिंकिंग में थोड़ा सा हर समय पॉजिटिव, लेकिन एक उम्मीद से भरा मन कि आगे अगला वाला पल ठीक होगा, कल ठीक होगा, आने वाला कल ठीक होगा, इसमें कोई बाहर से पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है। एक तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लाना चाह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, या जो भी हम नया लाना चाह रहे हैं, उसमें हम मार्जिन कम रखें लेकिन नंबर ऑफ यूजर बढ़ा दें। क्योंकि अभी बहुत बड़े मार्जिन पे काम करने का टाइम नहीं है, हाई मार्जिन पे काम करने का टाइम नहीं है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को हम लेके आए। आई एम अ कंसल्टेंट फॉर अ लीडिंग कंपनीज, और बहुत सारी कंपनियों का मैं ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ। और उसमें से एक कंपनी का जो स्लोगन है वो बड़ा प्यारा स्लोगन है, दैट वी आर नॉट इन द रेस ऑफ टर्नओवर, वी आर इन द रेस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट।
हम टर्नओवर के रेस में नंबर 1 नहीं होना चाहते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट पे नंबर 1 होना चाहते हैं। हमारा प्रोडक्ट ही हमारा सेल्समैन बने, अलग से सेल्समैन की जरूरत नहीं। तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतरीन रखूंगा, अगर मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज इरिप्लेसेबल हो जाएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट ही बोलेगा मार्जिन थोड़ा कम भी रहे तो कोई बात नहीं है, मेरे प्रोडक्ट को लेकर, मेरी सर्विसेज को लेकर, मेरी बात को सुनकर अगर कोई कहता है वाह इट वाज गुड, मजा आ गया, तो ऑटोमेटिक वो 4 लोगों को रेफर करेगा। सो लेट मी जस्ट रिकैप वंस अगेन। एक तो लेट अस कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड न्यूज, दूसरा है लेट अस कीप अ होपफुल माइंड, तीसरा है लेस मार्जिन और हाई वॉल्यूम बिजनेस की तरफ हम थोड़ा मूव करें, एंड थर्ड इज ईदर डिमांड एंड सप्लाई और सप्लाई एंड क्रिएट अ डिमांड। आप नेट पे भरती चीजें अवेलेबल हैं, आने वाले 60 दिन 70 दिन 1 साल में क्या क्या नई चीज आने वाले हैं। अभी आप जान के हैरान हो जाएंगे, 1 साल पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था तो उसमें पता लगा, बिकॉज आई डू मेनी सेमिनार फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और मैं एक मैसिव चेंज टीचिंग इंडस्ट्री में लाना चाहता हूँ, टीचिंग फील्ड में लाना चाहता हूँ। यू सी इट इज नॉट द सब्जेक्ट विच इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू डिलीवर द सब्जेक्ट विच इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारे टीचर ठीक से सब्जेक्ट को डिलीवर कर दे तो मैं ऐसा मानता हूँ कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। 40 बच्चे का 40 IQ होता है, उसका तरीका होता है अलग अलग समझने का। सो व्हेनेवर अ टीचर सेज कि तेरे से नहीं होगा, यू कांट डू, ये सब मैंने भुगता हुआ है, बचपन में बहुत भुगता हुआ है। You know, when I studied in a government school, which is 2 rupees 30 paisa per month was my fee. It was a सरकारी, प्योर सरकारी स्कूल, no question of English, हिंदी भी बहुत देर से ठीक से लहजे में बोलनी थी। So, but I was passionate to speak in English. मुझे बड़ा मजा आता था अंग्रेजी में बात करने के लिए, लिटरेचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। So when I spoke for the first time in English, my English teacher, she said, she called me और बड़ा इंसल्टिंग टोन में उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर अग्रवाल, may I humbly request not to speak in English anymore. अच्छा, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा उन्होंने क्या बोला, क्योंकि थोड़ी भारी इंग्लिश थी। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। I said, मैडम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। She said, don't speak in English anymore. I said, क्यों? She said, it's so horrible. It gave me a feeling as if Shakespeare will come out from the graveyard. तो ये बात मुझे पता ही नहीं पड़ी उन्होंने क्या बोला। फिर बगल में मेरा एक कॉन्वेंट स्कूल का मित्र था जो किसी कारण से इसमें आ गया। He said, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा तू अंग्रेजी में बात ना किया कर, वो कह रही शेक्सपियर जो मरा हुआ है उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। दैट वाज शॉकिंग। अब मुझे समझ में आया कि जी मेरी बड़ी अच्छी से इंसल्ट की गई है। सो आई आस्क्ड माय कॉन्वेंट फ्रेंड, फ्रेंड, यार हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू टीच मी, कैन यू गाइड मी। ही सेड, देख 2 लाइन बता देता हूँ, जिंदगी भर याद रखना। और इसी टोन में उसने बोला था, तो मैं आपको उसी लहजे में बता रहा हूँ, बिल्कुल घरेलू टोन में। ही सेड, इंग्लिश बोलने का 2 फंडा है। पहला, जो ठीक लगे वो बोलो। अच्छा एक्सक्यूज मी, हाँ जो ठीक लगे वो बोलो, और जिसको समझ में ना आए वो उसकी प्रॉब्लम। और आप यकीन माने मैं इतना हंसा। आई सेड, आर यू क्रेजी, तू पागल हो गया है। उसने कहा सुन, जिसको समझ में नहीं आएगा वो तेरे से अंग्रेजी में बोलेगा एक्सक्यूज मी, तो उसकी प्रॉब्लम है, तो हिंदी में बोल देना क्योंकि समझ में उसको नहीं आया। नाउ दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल ब्रेक थ्रू इन माय लाइफ माय फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू। आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग, और कैसे वो जुबान पे आ गई, रिपीट करते करते कैसे फ्लो आ गया। आज मैं 160 देशों में सुना जाता हूँ, इंटरनेशनल कंपनी से कुछ लोग मुझसे कोचिंग लेते हैं, और मैं हंसता हूँ अपने ऊपर। मैं अपनी अंग्रेजी पे आज भी हंसता हूँ। आई स्माइल, आई लाफ, बिकॉज दैट वाज टॉट बाय माय फ्रेंड आशीष। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक तो चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा है सप्लाई करके आप डिमांड क्रिएट करें। द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि आजकल आप यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, वो आपको स्टार्टअप के तरीके बताएंगे, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, आपको बड़ा मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जितनी जल्दी चीजें बताई जाती हैं उतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। अंग्रेजी में कहावत है, द सन राइज स्लोली बट लुक बियॉन्ड द वर्ल्ड इज ब्राइट। जितनी जल्दी से मैं बता रहा हूँ उतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। यू कांट चेंज योर लाइफ ओवरनाइट, बट यू कैन चेंज योर थिंकिंग ओवरनाइट। आप एक रात में अपना जीवन नहीं बदल सकते, बट सोचने का तरीका बदल सकते। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये एक नया वर्ल्ड है, इसके नए रूल्स है, नए पैरामीटर है, नया विजन है, नया सब कुछ है। तो अगर हम धीरे 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 अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे तो हम एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। एंड बिफोर आई कंक्लूड, बिकॉज नाउ 3:15, बिफोर आई कंक्लूड, 3-4 बातें मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा बिफोर आई कंक्लूड। बहुत समय पहले वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट एयरलाइंस लॉस में चल रही थी। इट वाज इन द लॉस, ह्यूज लॉस।
तो उन्होंने एक सेल्स के पर्सन को रिक्रूट किया एंड ही वाज नॉट फ्रॉम एयरलाइन बिजनेस, ही हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन सेलिंग। इस इंसान ने कहा कि मैं पहले रिसर्च करता हूं क्यों लॉस में चल रही है। उसने रिसर्च करके ये पाया कि कुछ कारण है जिसकी वजह से लॉस में चल रही है। और उसने एक और रिसर्च किया कि जिस कंट्री की वो एयरलाइंस है वहां की सबसे पॉपुलर फेमस आइटम क्या क्या है। तो उसने पता किया, ही फाउंड दैट द मेडिकल सर्विसेज एंड द मेडिसिन आर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फ्रॉम दैट कंट्री। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, ध्यान से पकड़िएगा, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, whomsoever takes this airline, whomsoever is taking this airline will be given free medical checkup. अब यूरोप और अमेरिका में मेडिकल चेकअप साल का बड़ा कॉस्टली है। Now if you see clearly there is no connection between airline business and medical service business, but दो अलग अलग चीजों को उसने ज्वाइन कर दिया and it became a profitable venture. So now is the time for us कि हम जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ कुछ नयापन लाएं, नई क्रिएटिविटी लाएं, और एक शब्द को जगह ना दे जीवन में, इट इज नॉट पॉसिबल। बस ये कहे इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, स्काई इज नॉट द लिमिट, आसमान लिमिट नहीं है, इसके ऊपर जाया जा सकता है। So with this small sharing, I thank all of you and I thank PhD and all the brothers and sisters and members of PhD कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने रखूं, और इन विचारों में से कुछ भी अगर परिवर्तन होता है, कुछ भी नई चीज आप अचीव करते हैं तो मुझे दुआएं जरूर दें, मुझे जरूर बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आपके साथ इस तरह यात्रा जारी रहेगी। So this ends first part of my presentation before I go to second part. Thank you, Ashish ji. Ashish, you have to unmute. Please unmute, Mr. Ashish. Sir, once again, sir. आशीष जी अनम्यूट करिए। कर दिए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर मैसेज to all the entrepreneurs and the startups founders in a very simple manner with lot of examples. I think nothing can be simple than that actually. If you see the message which we have given, that this never depend on the single income, that is a very good message. Then you have given the message that keep margin low in this current situation, you have to focus on quality. So I think these are the message which need to be understood by the entrepreneurs and the founders. This will help them to come out with this situation, to grow in their life also and to grow in their business also. So I think these are the messages which you have given to everybody in a very simple way. Then we have I think lot of questions from the audience. So Jitendra ji, do you have any raise hand from the audience? Yeah, if you see some of the questions, they are quite, common in nature. In the sense, somebody is asking that how do you keep yourself motivated in these depressing times, because the external ecosystem is totally depressing. So how do be always self-regulated, wherein we can always be in the motivating role. That is the most important thing, and I think it augurs well with this present times also. So any views on this, and also I request our Vice President, Mr. Pradeep Multani, if he has certain question or if he want to say something. All right. Sir, you can throw open some of the questions from your side, since you are also industry captain. You understand the pain points of your employees and also of your, partners also. Over to Mr. Pradeep Multani, Vice President of PhD. Right. Thank you, Dr. Jitendra ji. Rajesh ji, what a pleasure to hear what you have said. I have been making notes. कि भैया हमको भी इंडस्ट्री में we should be talking about we are in the race not for high turnover, we are in the race for supplying best quality products. Right. Yes. I think this is a wonderful statement. Also less margin, high volumes. I whatever you are saying is precisely what we are trying to do in our own company also. Right. And it is absolutely wonderful to share these sort of thoughts. And sir, definitely one thing is there, that this COVID-19, it used to happen BC or AC, before Christ and after Christ. अब ज़माना शुरू हो गया है before China virus and after China virus. I think this is going to be, like you also said, this is going to be a game changer. Absolutely. हम सबको अपनी जिंदगी की जो भी रहन सहन है पूरी बदलनी पड़ेगी. Right. और हम सबको ये भी ख्याल अब आ गया है कि भाई health is wealth also. I'm sure everyone must be looking after their health very much. And sir, thank you. What a
pleasure to hear you. This is just what I had in mind. And again, really, really very motivating what you have spoken. Thank you, Dr. Jitendra. Thank you, sir. Thank you very much. So, Mr. Rajesh, this first question, how to keep oneself, personally motivated in this depressing time? Sir, ये जो motivation है ना, the word motivation has not been, I think it has taken in a different track. First of all, let's say it's not possible to remain motivated 24 hours. You can ask Dr. Saab, he will let you know better than me, because if you're 24-hour motivated, there is कोई disorder है इसका मतलब. So अगर मेरे मन में 55,000 विचार रोज गुजरते हैं, as per the scientists जो बोलते हैं, so sometimes it is positive, sometimes it is low, sometimes it is up, sometimes it is down. My own understanding, this is my purely my, that behind motivation is your consciousness, which is always motivated. So when you are low, when your mind is low, you just watch your mind, that now my mind is low, so I will just hold myself, थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा इंतजार करता हूँ, 20 मिनट बाद ये माइंड ठीक हो जाएगा. बट होता क्या है कि जब माइंड लो हो जाता है तो कहते हैं ये क्यों लो हुआ, ये क्यों डाउन हुआ. अरे भाई हो गया ना, स्वीकार कर लीजिए, थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगा. सो मैं इसमें थोड़ा सा अपने भारतीय स्पिरिचुअल जो हमारे गुरुज है उनका वर्जन देना चाहूंगा कि रादर देन पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, वी आर कॉलिंग रियलिस्टिक थिंकिंग, कि राइट नाउ माय माइंड इज डाउन, सो आई एक्सेप्ट इट, थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगा. मगर अगर आप 24 घंटे माइंड मोटिवेटेड क्यों नहीं है तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी. So when it is down, I must accept. हमारा भी डाउन होता है. I mean, we are in this business of training since last 30 years or 25 years. हमारा भी मूड स्विंग होता है, हमारा भी डाउन होता है. So what we do? हम बैठ जाते हैं, थोड़ा बाहर चले गए, थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, बाद में माइंड ठीक हो गया. So let us accept this is the nature of mind. इसको एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ आपके माइंड की दोस्ती हो जाएगी. Thank you very much. In fact, दूसरा क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है, what are the mandatory skills that are required in this year 2020? And this COVID has totally changed the skill landscape also for startups. So people have to reskill or upskill. So in this change scenario, what are the important skills one needs to hone up in order to survive in this battlefield? Sir, before COVID-19, we were quietly focusing on technical skill. But what I realized, and I would like to have a version for all other our eminent panelists and हमारे जितने PhD चैम्बर के मित्र हैं, अब people handling skill बहुत ज्यादा important हो गई. Connection with people, talking with people, joining people, interacting with people, लोगों के अपने network में लेना, contact बढ़ाना, all this club together says people handling skill. So to my mind, people handling skill will become more important gradually post COVID-19 or during COVID-19, rather than only depending on technical skill. I always say technical skill आपको 2 वक्त की नौकरी तो देती है, रोजी रोटी देती है, but people handling skill आपके साथ लोगों की दुनिया बनाती है, और लोग ही हमारी एसेट है. जितने लोगों को हम अपने साथ जोड़ पाए उतना हम कामयाब होंगे. So I think we should focus more with technical skill is people handling skill. Thank you very much. In fact, people skill or people handling skill is paramount at this point in time, undoubtedly. So over to Mr. Ashish Aggarwal. Mr. Aggarwal, if you have any question. Yeah. So, sir, one question is coming from the audience. In this COVID situation, there are a lot of startups who are getting difficulty to survive in this situation. So how you will advise them to motivate themselves when their business is getting shut down during this lockdown? You see, I will take the case of our friend Ritesh Aggarwal, who is the owner of Oyo. And Ritesh has been affected very badly in this COVID-19. But you'll be surprised to know, yesterday night I was going through YouTube and उसमें उन्होंने बोला कि मैंने सबसे ज्यादा इस 2 महीने में सीखा है. मतलब this guy who is hardly 30, देखिए इनका mindset देखिए कितना बढ़िया mindset है कि during this survival I have learned a lot. So what I'm trying to say that I began my talk by saying कि let us accept the fact that we are passing through a challenging moment. तो इस समय टर्नओवर, बड़ा पैसा, बड़ी टर्नओवर, तुरंत फंडिंग आ जाए, it is not going to happen like this. So first thing is to accept we are passing through a tough moment. Accept नहीं करेंगे तो mind worry में जाता रहेगा. Somebody said beautifully, it is not the incident outside which bothers you a lot. What is happening in this brain which bothers you a lot. So first of all, let us accept. मैं भी affected हूँ. मेरे जो fixed client थे जिनसे महीनों के बड़ा अच्छा टर्नओवर था, अच्छा बिजनेस था, सब जीरो पे चल रहे हैं. I am also affected commercially, but I have accepted it. I said fine, that's all. So first thing, let us accept. The second part, let us draw a strategy.
Do not allow your mind to, to stop. उनको रोके ना, अपने मन को सोचते रहे, नई थिंकिंग करते रहे, काम बढ़ाते रहे. Only an activity based mind is a happy mind. This is my realization. अगर मन ने सोचना बंद कर दिया तो आप ये समझे कि एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, हमने सुना है. अगर मन, आपने देखिए मुझे कितना एहसान किया है मेरे ऊपर पीएचडी चैम्बर ने और आप लोगों ने. आपने ये टॉपिक देकर मुझे 4 दिन से बुक कर रखा है. माय माइंड वाज बुक्ड कि मैं जब बोलूं तो कंटेंट इतना अच्छा हो ताकि लोगों तक पहुंच पाए. ठीक है. सो यू हैव बुक माय माइंड. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. सो मेरे उन मित्र को मैं ये कहना चाहूंगा कि कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग. हमारी दो ही एसेट है. एक एसेट है हमारी सोच और दूसरी एसेट है हमारी जुबान, और इसके अलावा कोई एसेट नहीं है. अगर सोच की क्वालिटी अच्छी है, जुबान की क्वालिटी अच्छी है, सारा वापस आ जाएगा. तो एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, दुनिया वालों तुम मुझसे मेरी सारी संपत्ति छीन लो, लेकिन मेरी सोच और जुबान को नहीं छीन पाओगे, इससे मैं छीनी हुई संपत्ति वापस ले लूंगा. इट वॉज अ ब्यूटिफुल कोटेशन रिटन बाय समबडी. तो मैं अपने उस मित्र को कहना चाहूंगा जो स्टार्टअप में कि यस वी आर पासिंग थ्रू टफ मोमेंट, बट कीप थिंकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग. जो मैंने आइडियाज दिए हैं उन पे काम करें एंड थिंग्स विल. जैसे स्विगी ने, मैंने एग्जांपल दिया, स्विगी ने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया. कहाँ वो फूड सप्लाई करते थे, वो ग्रोसरी में भी आ रहे हैं. और माफ करें, मैंने ऐसे भी पता लगा लिकर का भी सप्लाई में आ रहे हैं कि लिकर भी वो घर पे सप्लाई करेंगे. गुड और बैड में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट ये सच्चाई है. तो मैं अपने मित्र को ये कहना चाहूंगा दैट कीप थिंकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, यू विल हैव मेनी मोर आइडियाज. और आइडियाज सोचने पर ही आएंगे. अगर माइंड को रोक दिया तो आइडियाज नहीं आएंगे. Thank you, Mr. Aggarwal. In fact, there is also a question from Mr. V.K. Mishra. He is the senior member of the managing committee of PhD Chamber. जी. His question is that staff at work who are working from home, they are complaining how to balance their personal work or homework pressure. How to justify their work. वेरी गुड सर. मैं अप्रिशिएट करूंगा मिश्रा जी को, इन्होंने बड़ा. सर लास्ट 45 days I can give my own example. I am working from home, but what I did, I have divided my time in 3-hour segment, and I will share what I am doing. Maybe मिश्रा जी को उनसे कुछ क्लू मिल जाए और वो उसको यूज कर सके. I start from 6 to 9 for my health, then 9 to 12 another segment, 12 to 3 another, 3 to 6, 6 to 9, and finally 9 to 12 goes in little playing carom board with my family, playing Ludo with my family, because I also need some kind of entertainment. I avoid bad news, I avoid shouting news because उससे मैं disturb हो जाता हूँ. I listen to J. Krishnamurti, I listen to Osho, I listen to Chinmayananda ji, I listen to Morari Bapu ji. मैं सबको सुनता हूँ, सबसे मैं लेता हूँ. So I would request मिश्रा जी कि वो अपने टाइम को 3-3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करें, तो आपको पता रहेगा 3 घंटे में मैंने क्या अचीव किया. अचीवमेंट जैसी होती है, आपके माइंड से वाव निकलता है, वाव कुछ हुआ, कुछ अचीव किया. जब तक अचीवमेंट नहीं होगी, माइंड से वाव नहीं निकलेगा. और दूसरा मैं उनको ये कहूंगा कि वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट. होम और ऑफिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो वर्क करना है तो करना है, जगह बदल जाएगी वो बात अलग है. वो कहते हैं ना, एक शेर है, सुना देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा शेर शायरी कर के, क्या कहते, खुदा भी डरता है हमें जहन्नम में भेजने से, उसे डर है हम जहन्नम को जन्नत में ना बदल दें. तो अपने को थोड़ा टाइम को डिवाइड करना है. और रात को मैं ये कहूंगा कि लास्ट थॉट आपकी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा म्यूजिक, बिकॉज लास्ट की जो थॉट होती है वो सुबह की पहली थॉट होती है. और आप देखेंगे धीरे धीरे 21 दिन में लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी आप. Thank you very much indeed. Very aptly answered. Now request Mr. Bharat Singh Mehta ji, who is the co-chairman of our startup forum, to give his concluding remarks and quote of thanks. Over to Mehta sir. Thank you, Dr. Jitendra Singh. Rajesh ji, I must compliment you for an excellent talk that you gave today. Thank you, sir. It's something really lift the morale and the spirits of the people who have heard. Thank you, sir. I personally benefited a lot. I'm sure many of the, most of the participants would have done it. We are all passing through a very difficult time. That's a fact. That's a fact. I mean, there is no denial to it. No. But what you have told us is very important. The challenges will be there, challenges are there, will continue to be there. What we have to do is to find ways and means of dealing with those challenges, and how can we convert those challenges into opportunities. These are the two things that we need to really work on. Absolutely. And
today you have actually given us practical tips on how can we convert these challenges into opportunities, which need to be looked into very seriously and worked upon. Yes. While talking, I mean, those Warren Buffett's quote and other things are excellent. I mean, that you cannot have all your eggs in, one basket and Yes. feel Yes. very happy. These things are definitely very, very important. I would also like to add one small thing to what you told just now in response to the question from one of the attendees here, that if I'm feeling low, Mm. what do? You rightly said that Mm. take out some time, let it cool it down, and it will lift you. Ah. I would like to share with you that yes, one is Yeah. weight, Mm. and beyond that, you need to, after a certain appropriate time, whether it is 10 minutes, half an hour, 1 hour, not tomorrow, Ah. you need to talk to yourself. You need to talk to your own child. You need to talk to your soul as to what is bothering me. Why is it bothering me? Is it Right. that big a thing to bother about? Or should I actually be working on solving it? But Right. that can be done only after you have passed through that phase. Rightly said that Right. you have to wait for a little while and then move to that part. Right. So that's a very, very effective thing that you mentioned, that Right. we need to really work on it. And I particularly like the thing that you mentioned, that set your targets first. Forget about realities of life. Forget about what is going to happen in the business. It will happen only when you work on it. Yes. So you set your challenges, even if they look utopian to others or unrealistic to others. Right. But you know from inside that this is where I want to reach. If not today, if not tomorrow, but day after tomorrow, I will definitely reach. And Yes. this is something that is going to remain with me. It's a very good thing Thank that you, you sir. have mentioned, and we would like to really work on. So this is another important thing. Another thing that you mentioned, that negative news. This is something that I personally fully agree and follow. Stay away from the negativity. Why worry about it? This is happening. This will happen. That's okay. As long as for information you have filtered it, fair enough. But stay away and work on the positive areas which are there. So thank you so much, Aggarwalji, for a wonderful and enlightening talk that you gave us. We all are immensely benefited by it, and definitely one or two learnings that we have got out of this, we would like to carry and work on them, and that should be the reward to you that we are carrying it in. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you you very so much. much. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Bye-bye. Aggarwalji. Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much. Thanks, all participants. Thank you, sir. Bye. Thank you.